Assalamu alaikum students. Today our topic to discuss is factors, multiples, prime numbers, composite numbers and how to find prime numbers. Basically we are starting a new series. हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज में हम लोग factors, multiples, prime numbers, composite numbers, how to find prime numbers, then LCM, HCF, then how to find cube root, square root, index notation, इन तमाम चीज़ों को cover up करेंगे. So this series consists of 4 videos which starts from today, and this is our first video related to it, in which we will discuss about the factors, multiples, prime numbers, composite numbers and how to find prime numbers. ठीक है जनाब. So आगे बढ़ते हैं. First of all, we will like to discuss about factors and multiples. कि factors और multiples होते क्या और इन दोनों में basic फर्क क्या होता है. Factors are what we can multiply to get the numbers. When we multiply two numbers, we'll get a product. ठीक, तो वैल्यूज विच वी आर मल्टीप्लाइंग टुगेदर, जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं उस प्रोडक्ट के जो कि हमें रिजल्ट में मिला है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी मल्टीप्लाई 6 by 1, जब हम 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी गेट 6. इट मींस 6 and 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. सिमिलरली व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 by 3, वी ऑल्सो गेट 6. जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या आंसर मिलता है 6. इसका मतलब 2 and 3 आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ 6. It means 1, 2, 3 and 6 are factors of 6 all together. अगर मैं आपसे कहूँ what are the factors of 6, तो इसका मतलब its answer would be 1, 2, 3 and 6. In other words, or more simpler words, we can say if a number is completely divisible by a number, you are dividing two numbers, ठीक है, और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो उस नंबर को, न्यूमरेटर को, एक होल नंबर में आंसर दे दे, मतलब हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे, then the divisor is known as the number through which you are dividing any quantity. So that divisor is known as factor. So factors दो तरीकों से डिस्कस किए जा सकते हैं. नंबर 1, वो नंबर्स जिनको जब आप मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाए. तो प्रोडक्ट के फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे? जो दो नंबर्स आपने मल्टीप्लाई कराए थे. इन अदर वर्ड्स या सिंपलर वर्ड्स, वो डिविजर जो किसी नंबर को जब डिवाइड करे तो होल नंबर में आंसर दे विदाउट एनी रिमाइंडर आंसर दे, इसको हम फैक्टर्स कहते हैं. ठीक है, तो फैक्टर्स को सबसे इजीली आप कॉल कर सकते हो एज डिविजर. Multiples are what we get after multiplying the number by an integer, not a fraction. Multiples क्या होते हैं? जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6. So what we are getting? Basically we are getting the multiples of 6. ठीक है? For example, when we multiply 1 by 12, we get 12. Similarly, when we multiply by 2 by 6, we get 12. When we multiply 3 by 4, we get 12. So the thing is that 12 is the multiple of what? 1, because 12 is coming in ones table. 2, because 2 6 are 12. So 12 is the multiple of 2. 3 times 4 is 12. It means 12 is the multiple of 3. 4 times 3, 12. It means 12 is the multiple of 4. And 6 times 2, it means 12 is the multiple of 6. So the thing is that कि जब आप किसी नंबर का टेबल पढ़ते हो तो उस टेबल में जो वैल्यूज आपके पास आ रही होती हैं, that values are known as multiple. सबसे simplest definition क्या हो जाएगी? In simpler words, a number which comes in the table of any number is known as multiple. Factors क्या था? A divisor. ठीक है, मल्टीपल क्या है? वो नंबर जो किसी नंबर के टेबल में आता है. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So 2 6 8 जितने नंबर मैंने कॉल किए हैं, बेसिकली ये मल्टीपल्स हैं किसके? 2 के. So this is the basic theory about factors and multiples. Moving ahead, we would like to discuss about the prime and composite number. So a prime number is a whole number that only has two factors which are itself and 1. For example, 7 can be completely divisible by itself and 1. A number that is divisible by itself and 1 only. It means, in other words, we can say that prime number has only two factors. It has only two divisors, either itself, मतलब वो खुद, या 1. So प्राइम नंबर के आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स मिलेंगे, या तो वो खुद होगा या वो 1 होगा. सो इन अदर वर्ड्स, या इन basic terminology we can use it, a prime number is a whole number that only has two factors which are itself and 1. सबसे अच्छी एग्जांपल 7 can be divisible by itself only to get a whole number, or divided by 1 to get a whole number. 7 divided by 1 7, 7 divided by 7 7, divided by 1 7, and 7 divided by 7 equals to 1. इसके बीच में आप किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, यू विल नॉट गेट अ होल नंबर. 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 3 2.33 आ जाएगा, एंड सो ऑन. सो इट मींस अ प्राइम नंबर हैज ओनली टू factors,
itself and one only. While composite number has more than two factors. It may be 3, 4 or infinite, but more than two factors. A composite number has factor in addition to one and itself. कौन कौन से one और itself के अलावा, उसके अपने अलावा कोई एक factor और ज़रूर होना चाहिए. For example 8. 8 can be completely divisible by 1. 8 ones are 8. 8 divided by 1 equals to 8. 8 divided by 2 equals to 4. 8 divided by 4 equals to 2, and 8 divided by 8 equals to 1. So it means 8 has 4 factor. ठीक है, while the definition of prime number tells us that prime number has only 2 factors. So अगर एक नंबर के दो से ज़्यादा factors आपको मिल रहे हैं, it means it must be a composite number. So I guess we know about the basic definition of prime and composite number. Prime numbers are those numbers which are divisible by themselves and one only, while the composite number may have more than 2, must have more than 2 factors. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Special point. 2 is the only even number which is also a prime number. तकरीबन तमाम even number excluding 2. 2 के अलावा जितने भी prime number, 2 के अलावा जितने भी even numbers हैं, they all are composite numbers. 2 is the only even number which is also a prime number. ठीक है, moving ahead. The most important topic, how to check a prime number. There are various methods to check whether a number is prime or not. We will discuss some of them as per your convenience. वैसे तो बहुत सारे methods हैं prime number को check करने के लिए, लेकिन हम कुछ एक दो methods को discuss करेंगे जो कि आपके लिए comparatively आसान है. So method number 1. Each and every prime number greater than or equal to 5 is written in the form of 6n plus 1 or 6n minus 1. We must check it with the help of an example. Let us consider 31. दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन तमाम प्राइम नंबर को आप 6 इंटू एन प्लस 1 या 6 इंटू एन माइनस 1 की फॉर्म में कर सकते हो. अब इसकी एग्जाम्पल ज़रा समझो. एन की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो 6 1 6, 6 प्लस 1 7. फिर मैं एन की जगह 1 पुट करता हूँ, तो 6 1 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5. सो 7 and 5 both are prime numbers, but there is an exception which we will discuss later. ठीक है, सबसे पहले हम 31 को डिस्कस करते हैं. So 31 can be written as what? 31 can be written as 30 plus 1, and 30 can be written as 6 multiplied by 5 plus 1. So we consider it as a prime number. You can check many other numbers by yourself too. इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं by solving it. ठीक है. Okay guys, we have a number that is 31 and we need to check either it is a prime number or not. 31 can be written as 30 plus 1 and 30 minus 1. As we have discussed earlier that every prime number is a factor of, it can be written as in the form of 6n plus 1 and 6n minus 1. In this scenario, 6n minus 1 is never equal to 31, so we can remove it and we can discuss only the 30 plus 1. So 30 plus 1 can be written as what? 30 is 6 multiplied by 5. 6 multiplied by 5. Okay? 30 can be written as 6 multiplied by 5 plus 1. So it is concluded that it is confirmed that 31 is a prime number because it is justifying the condition that it can be written as 6n plus 1 or 6n minus 1. 6n minus 1 cannot be justified here. So we can justify what? We can justify that janab 6 into 5 plus 1 exactly equals to 31. So 31 is a prime number. Got it? But there is an exception in this method that some composite number are also written in the form as 91 can be written as 6 into 15 plus 1. अब प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड में एक एक्सेप्शन है. हमने ये तो चेक कर लिया कि हर प्राइम नंबर 6n plus 1 या 6n minus 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इस मेथड के अंदर कुछ कंपोजिट नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे 31 इसकी सबसे अच्छी, 91 इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है. 91 कैन बी रिटन एज 690 plus 1 and 90 can be written as 6 multiplied by 15. So 91 can be written as 6 multiplied by 15 plus 1 and 91 can be divisible by completely to 7. मतलब 91 7 के टेबल में आता है, तो 91 तो प्राइम नंबर नहीं हुआ. इट मीन्स इस मेथड के अंदर एक एक्सेप्शन है, आपको डबल चेक करना पड़ेगा. मेथड क्या था? हर नंबर को आप 6n plus 1 या 6n minus 1 की फॉर्म में लिखोगे. अगर वो जस्टिफाई कर रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा. लेकिन एक्सेप्शन क्या है? देयर आर सर्टेन नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज देम
there are some composite numbers which can be written according to that method, so we need to double check the values. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Method number 2, find the nearest square root of a number. Now check the prime number which are smaller than the square root. आपने सबसे पहले किसी भी नंबर का जिसको आपने चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, आपने उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट मालूम करना है. फिर आपने देखना है कि स्क्वायर रूट में आपके पास जो वैल्यू आ रही है उससे छोटे कितने प्राइम नंबर्स आपके पास मौजूद हैं. उसके बाद आपके पास जो वैल्यू थी उस वैल्यू से आपने उन तमाम प्राइम नंबर्स को चेक करना है कि क्या ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे. अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 127 और हम 127 को मैथमेटिकली सॉल्व करके चेक करेंगे कि आइदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट. ठीक है, so guys, we need to check whether 127 is a prime number or not. Starting from the first step, we need to find the nearest square number of 127, and the nearest square number from 127 is 121, and 121 is the square of 11. It means 11 is the square root of 121. Now you need to find the prime number that are smaller than 11, and we know that 2, 3, 5 and 7 are the prime number that are smaller than 11. And now you need to check whether 127 are divisible by these four numbers or not. We know that 127 is an odd number while 2 is an even number. So 127 is not divisible by 2. We also know that if we sum all the values of 127 means 1 plus 2 plus 7. If the sum of these values are divisible by 3, then 127 is also divisible by 3. So 1 plus 2 plus 7 equals to 10, and 10 is indivisible by 3. It means 127 is also indivisible by 3, as we have discussed in the test of divisibility. 127 ends at 7. It doesn't end at 5 and 0. It means 127 is indivisible by 5 too. And finally we need to check 7, and 7 times 18 equals to 127. 127 is indivisible by 7 completely, so it means the prime number that are smaller than 11, that are 2, 3, 5 and 7, and 127 are indivisible by these numbers, so 127 is a prime number. So we have two methods of finding prime numbers. Which two method? The method number 1 is every prime number can be written as 6n plus 1 or 6n minus 1. There was an exception that some composite numbers can be written as in this way. And the method number 2, we have a number, we need to find the nearest square, and then we need to find the nearest square root, and then we need to find the prime number that are smaller than the square root. And then we need to check, we need to divide every number, we need to divide that particular number to those prime numbers, and if that number is divisible by any of the prime number, it means this is a composite number. And if it is indivisible by any of the prime number that are smaller than the square root value, then it means this value is a prime number, as we have solved it on the screen. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.